Hey guys, so it's a get ready with me video, so let's get started. Firstly, I'm applying this Bling Illuminating Moisturizer by Sugar. This is such a beautiful moisturizer. I'll try. Look shiny, right? ये moisturizer एकदम strobe cream की तरह work करता है, so it's very hydrating और आपकी skin को एकदम glowy बना देता है. Next, I'm gonna be using Aquaholic hydrating primer. So this is really a good primer. It really hydrates your face and make your makeup looks dewy. Lip balm. So I'm gonna be using this concealer shade. It's 130 medium. Here, जहाँ पे मेरे dark circle हैं and also इस area पे, यहाँ पे मेरे pimple marks हैं और जहाँ पे मेरे ये marks हैं. Fluffy brush something लेके इसको हल्का सा blend करूँगी. So I'm gonna be concealing my under eyes and everything. So ये जो shade है मेरे पास ये है 001 Fair. So you know आपको बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है. Using this same concealer for which you be using for your under eye concealing, use it on your eyelids also for a base for your eyeshadow. Yes. So this is something I use for my concealing purpose, and next I'm going to be using this shade. This is 130 medium. Now this is for contouring. So I'm going to be following my jawline और इस jawline के हिसाब से मैं अप्लाई करूँगी. So मेरा जो contour है मैं हमेशा यहाँ प्लेस करती हूँ जहाँ मेरी jawline एंड हो रही है. मैं यहाँ यूज़ करती हूँ for concealer on my double chin. सो जो आपका ये कंसीलर है जो आपको कंसील करता है, और आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो कंसीलर ये आपका कॉन्टूर में मिल जाए, जिससे जो आपका जो फेस है वो एकदम नेचुरली स्नैच्ड लगे. सो यू कैन सी माय फेस लुक्स रियली लाइक स्नैच्ड फ्रॉम बिफोर. ये इसका कॉन्टूर है बहुत सटल. बॉडी मुझे ऐसा सटल कॉन्टूर पसंद है एंड लाइक इट लुक्स रियली गुड. अब हम अप्लाई करेंगे आई थिंक द लाइटेस्ट शेड जो कि फॉर मेरा हाईलाइटिंग पर्पस के लिए. अगर आप चाहते हैं आपकी आईज ज़्यादा बड़ी दिखे समथिंग दिखे, तो हमेशा जो आपका हाईलाइटिंग कंसीलर है उसे अपने इनर कॉर्नर से यहाँ तक लाइए. ये प्लेसमेंट यूज़ करिए, इससे आपकी आईज बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिखेंगी, बड़ी दिखेंगी, बहुत एंशियंट लगेंगी. देन यहाँ पे थोड़ा सा माई हाईलाइटिंग पर्पस. आई लुक लाइक अ वॉरियर, राइट? अगर आपने हाईलाइटिंग इस तरह की है, मेरी तरह की है, तो आई वुड सी कि आप एक ब्रश यूज़ करिए. लाइक ये थोड़ा सा देख सकते हैं फ्लफी ब्रश है, इसे यूज़ करेंगे क्योंकि जो ब्रश होता है थोड़ा सा प्रिसाइज होता है और वर्क भी अच्छा करता है. इसको हमेशा स्टैप ऐसा दबा दबा के आपको वो करना है. बेसिक हाईलाइटिंग एंड एवरीथिंग इज डन. जंप करेंगे इस बेजान फेस में कुछ जान डालने के लिए. तो यूज़ करने वाले हैं शुगर का ये पैलेट जो कि मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ. सी इट्स फिनिश्ड. हीट द पैन. सो वी आर टेकिंग द ब्लश बिकॉज इस वक्त ब्लश की बहुत ज़रूरत है. सो हम बहुत ज़्यादा हो गया. ये तो मुझे नहीं पता ये तो ज़्यादा हो जाएगा. कोई बात नहीं, हम इसे कम कर लेंगे. अगर आपका ब्लश से ज़्यादा होता है तो ये लीजिए जिससे आपने काम किया था. दिस विल डू द वर्क. आई एम गोना बी यूजिंग द सेम ब्लेंडर टू हाईलाइटर. पानी का हाईलाइटर हमेशा फिंगर से ही अच्छा लगता है, पर यहाँ करूँगी. तो कॉन्टूर को टच देते हैं. हाईलाइटिंग के लिए यूज़ किया था. आप सेम शेड को यूज़ करिए अपने आईज पे एज आई शेडो बेस एट योर आईज. अगर मैंने मेकअप नहीं सेट किया क्विड लिपस्टिक ले रही हूँ बिकॉज आई शेडो पैलेट बहुत ही लग रहा है. सो यू कैन सी मैंने बहुत लाइटर हेड अप्लाई किया और ये कितना प्रिटी लग रहा है. अगर अभी अप्लाइंग लाइनर एंड काजल. ज़्यादा डिमांड करने का मेरा मन भी नहीं है. टेक दिस हाइलाइटर inside my inner corner.
my brows. I'm gonna be using this lip liner to line my lips. Does an incredible job. Making your lips look more pouty. This is a lipstick Glamvery something. ये मुझे फ्लिपकार्ट पे मिली थी, so मैंने ये आई शेडो जगह यूज़ की है. Same as my lipstick also. So it's a very creamy formula and I love the lipstick and I love the color. And I'm gonna be curling my lashes and using mascara because I think mascara काफी missing लग रहा है. I'm gonna be using Sugar का Black Volumizing mascara. बहुत ही अच्छा mascara है guys. ये definitely check it out. अगर आपको mascara लेना है, it's a good mascara. इसका bond देख रहे हैं, काफ़ी thin है, पतला है और inner corner में बहुत आसानी से लग जाता है ये. See? And आपके lashes भी काफ़ी अच्छी लगती हैं. So yeah. Everything's finished, done. You can finish it off with a setting spray. I'm using it Monday. So this is the makeup look. I think मुझे pink पहनना चाहिए. It will look much better, right? Into this cute pink dress because I think it's Barbie era. It's too much Barbie for these days. If you like this video, don't forget to like, subscribe and press the bell notification. I'll see you in the next one. Till then, bye bye, take care.